Jai Hind to all of you. Myself Dr. Kamal Kumar Mittal from Ajay Kumar Garg Engineering College. The department is Mechanical Engineering. So, continuing with the course of that is running by AKtU Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow, that is Computer Integrated Manufacturing, and the code is KME051. So, continuing with this series of lectures. So, today I will discuss about some basics of manufacturing system. So, before that I have already discussed about introduction to SIM, some automation, revolution of automation, different types of automation like fixed automation, flexible and programmable automation. I have already discussed some brief about line balancing, then different components of computer integrated manufacturing like computer design, computer manufacturing. So, continuing with this introduction to manufacturing systems, a manufacturing system is defined as a collection of integrated equipments. Integrated equipments means जितने भी equipment किसी मशीन में हो वो एक दूसरे से connected हैं या मशीन के एक मशीन और मशीन से मशीन एक दूसरे से connected हो through some material handling system like automated guided vehicles, some conveyor is there. So, manufacturing system is defined as a collection of integrated equipments. एक मशीन की बात हम करते हैं, सपोज एक लेथ मशीन है जैसे, दिस इज हेड स्टॉक, दिस इज टेल स्टॉक, these are the column, then bed is there, so there is a tool post is there having different tool, then other component like cross slide, guideways, then gearbox is there to rotate this chuck. We are having the gearbox system is there to support some component, some rod is there, tail stalk is needed. So, all these components are integrated to each other. So, this makes a machine. So, integrated equipments, these components are integrated to make a machine. Similarly, number of machines are there, they are integrated to each other. So, like we can say machine 1 is there, machine 2 is there, machine 3 is there, machine 4 is there, मशीन 5. सपोज 5 मशीनें हैं और हमारा यहाँ से इनपुट है रॉ मटेरियल. ये एक मशीन पे प्रोसेस होता है, उसके बाद दूसरी मशीन पे जाता है, आउटपुट दैट इज फिनिश्ड गुड. सो एक इनपुट है, रॉ मटेरियल है, एक मशीन पे ऑपरेशन होता है ओवन. सो एक मशीन से दूसरी मशीन के ट्रांसफ़र के बाद यहाँ पर हमारा मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है. मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम का पर्पस होता है कि जैसे ही ये प्रोसेस पूरा हो, पार्ट को यहाँ से दूसरी मशीन पे ट्रांसफ़र कर दे. ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पार्ट्स यहाँ पर वेटिंग लाइन में हो, क्यू में हो, जब तक कि यहाँ पर प्रोसेस ना हो जाए. तो उसके लिए भी हमें एक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम रखना होता है. दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट विच वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस. So, that may be conveyor type of system, some line assembly is there, some conveyor, some automated guided vehicles are there. We are using pallet trucks. एक pallet trucks का पर्पज़ होता है यूनिट को क्वांटिटी को, एक पैकेट को एक मशीन से दूसरी मशीन, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करना. So, after completion this O2, then third operation, then fourth, then
we will get a desired object, desired product. So, these are all integrated equipments. And human resources be very important very important part in a manufacturing system. They are basically the person who are taking who are for loading and unloading the raw material and unloading the finished good used for this purposes. So, ह्यूमन बीइंग का यूज़ है कि रॉ मटेरियल को लोड करना और आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑल ऑपरेशंस उसको अनलोड करना, जो कि हमारा फिनिश्ड गुड मिलता है. द बेसिक फंक्शन नॉट ओनली दिस बट ह्यूमन रिसोर्सेज आर आल्सो हेल्पफुल इन शेड्यूलिंग एक्टिविटीज़. अलग अलग तरह की शेड्यूलिंग एक्टिविटीज़ हैं, कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल होती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए वी आर यूजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज. The basic function of which is to perform one or more processing and or assembly operations. केवल ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल हम प्रोसेसेस मीन्स कोई मशीनिंग हो रही हो, कोई कास्टिंग प्रोसेस हो रहा हो, कहीं कोई कूलिंग का वो हो, कहीं डिस्चार्ज इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग से मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन हो रहा हो, बट आल्सो यूज फॉर असेंबली ऑपरेशंस. असेंबली ऑपरेशंस का मतलब है कि अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, उनको एक जगह असेंबल करना. मीन्स इन ऑटोमेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द लाइन असेंबली. लाइन असेंबली में क्या होता है, एक कंपोनेंट आता है, फिर उस पर दूसरा एक ऑपरेशन होता है, दूसरा कंपोनेंट ऐड होता है, फिर थर्ड फोर्थ, एंड दैट मेक्स द फुल कंपोनेंट. फॉर एग्जांपल लाइक इन ए 4-wheeler देयर आर डिफरेंट असेंबलीज लाइक seating arrangement is there, suspension system is there, lighting assembly is there. So, all these small assembly, engine assembly is there, clubbed together and make a whole product. So, assembly operation on a starting raw material part or set of parts. So, this is basics of manufacturing system. Then components of manufacturing system. Production machines like lathe machine, milling machine, drilling machine. These are the different production machines and tools, fixtures and other related hardware. Fixtures हैं और भी related hardware components हैं that is used. These are the components. Material handling system like AGVs, automated guided vehicle, conveyors, pallet trucks, etc. Then comes the computer system to coordinate and control the above components. So, basically computer system like we can say CNC machines. In CNC machines we are using different codes that is used to run the program. There is a different rules are there, different logic is there to run the program and to run the machine. Then for scheduling purposes also we are having the annual demand होती है हमारे पास कस्टमर के द्वारा. Then we convert annual into monthly basis, then weekly basis, then daily basis. So, these demand, these planning, scheduling कि किस मशीन पे कितने मैन पावर की ज़रूरत है, कितना टाइम उसमें लगता है, थर्ड पार्टी की ज़रूरत है, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर की ज़रूरत है, कितना हमें वेंडर से रॉ मटेरियल लेना है. तो दैट ऑल वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ सम सॉफ्टवेयर लाइक ERP सॉफ्टवेयर वी कैन यूज़ टू रन द ऑल द एक्टिविटीज़. Then finally, human workers which are used to organize, perform the different duties like loading, unloading of the objects and other tasks. So, these are the different components of a manufacturing system. Now, manufacturing system, here there are two things, one is production system, one is manufacturing system in a larger production system. So, in this manufacturing system, one is automation and control technology. So, manufacturing system is supported by automation and control technologies. Automation means minimal involvement of human being. Human being का कम से कम या आंशिक रूप से उसकी आवश्यकता हो किसी प्रोडक्ट को बनाने में, किसी प्रोडक्ट को रन कर, किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में, क्या मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या नंबर ऑफ मशीन्स हैं उनको चलाने में, उनको यूज़ करने में कम से कम आवश्यकता हो. So, in automation there are different type of automations like fixed
automation, programmable, flexible automation. So these are the different type of automation. In fixed automation there is no use of computer का कोई उसमें रोल नहीं होता, मास प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, वैरायटी कम मिलती है हमें. प्रोग्रामेबल में क्या है कि वी कैन प्रोग्राम, वी कैन प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, बट द कॉस्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज मोर, but the accuracy is more in this type of system. Then control technologies. Control system, we can say there are open loop control system and closed loop control system. Open and closed. Closed loop we can say like feedback control system is there in this type of system, like for maintaining the temperature in a cabin. So some feedback sensor is there that sets and sends the signals to the controller, and if the difference between the input parameter and output variable is 0, then the controller sends the signals to the actuator, and actuator stops its functioning. So that is the role of control technologies. Material handling technologies like AGVs, conveyors, pallet trucks, etc., that are supported with material handling technologies. Then quality control system. There are two types of quality control system: internal quality and external quality. So these are the two types of control quality system. Internal quality system means within the shop floor, जहाँ पर actual production हो रहा है, shop floor पे manufacturing हो रही है, वहाँ पर internal quality system होता है. The objective of this is to defect prevention, not the defect detection. हमें defect को prevent करना है, ना कि उसको detect करना है. तो this is at the shop floor. We are applying different techniques, different concepts, like we are applying Poka-yoke, mistake proofing, ठीक है. Then comes the external quality control system. External factor means outside the shop floor, means between manufacturer and vendor and between customer and manufacturer. Means after delivering the product to the customer, customer को product deliver करने के बाद वारंटी पीरियड में यदि कोई दिक्कत आती है तो वो कस्टमर उसको वापस मैन्युफैक्चरर को देता है. उससे एक तो कॉस्ट जो होती है उसमें वो मैन्युफैक्चरर को बियर करनी होती है, और एक जो रिलेशनशिप होते हैं कस्टमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में वो वीक हो जाते हैं. सिमिलरली वेंडर और मैन्युफैक्चरर के बीच में यदि रॉ मटेरियल में कमी है, ख़राब है, तो उसमें प्रोडक्ट को बनाने में डिलीवरी, या हो सकता है कि उसमें ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग सम डिफेक्ट अराइज हो जाए, तो वो भी हमें ध्यान में रखना होता है. तो दीज आर द टू कंट्रोलिंग फैक्टर्स. वन इज इंटरनल क्वालिटी एंड एक्सटर्नल क्वालिटी फैक्टर्स. देन थर्ड इज द मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम. सपोर्ट सिस्टम मीन्स सम टेक्निकल कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, थर्ड पार्टी एजेंसी की ज़रूरत है, सम सब कॉन्ट्रैक्टर की ज़रूरत है. देन वी गो फॉर दिस मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम टू reinforce our existing manufacturing system. So this is about the manufacturing system. Now there are different types of manufacturing system. One is dedicated manufacturing lines, means dedicated manufacturing lines, fixed line is there. This is used for mass production. Less variety. Flexible manufacturing system, variety is more, variety ज़्यादा होगी, production is जो production quantity है वो कम होगी हमारे पास. In this we are using CNC system, means computerized control machines for producing different type of variety of products. Third is the reconfigurable manufacturing system, that is basically the modular manufacturing system, means both software and hardware systems are modular in nature. So first is the dedicated manufacturing lines, DML, or transfer lines are based on fixed automation and product produce
company's core product or parts with high volume and less variety. इस प्रोडक्शन सिस्टम की सहायता से, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की सहायता से हमें एक लार्ज क्वांटिटी मिलती है और बट उसकी वैरायटी कम से कम होती है. सपोज देयर आर मशीन्स, मशीन 1, machine 2, machine 3, machine 4 and machine 5. Suppose there are 5 machines and here is the input, that is raw material, and here is the output, that is finished good. And suppose 5 operations are there, O1, O2, O3, O4, O5. These are the operations and these are the machines. अलग अलग मशीन है, उनमें अलग अलग ऑपरेशन हो रहे हैं. तो इस सिस्टम से हमें मास प्रोडक्शन मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है उसमें ये है कि सपोज वी हैव टू इंट्रोड्यूस ए और वी हैव टू मेक ए न्यू प्रोडक्ट. सो व्हाट इज देयर, वी हैव टू मेक चेंजेस, वी हैव टू शट डाउन होल द लाइन एंड वी हैव टू मेक चेंजेस, आइदर होल मशीन्स वी हैव टू रिप्लेस और सम मॉडिफिकेशन वी हैव टू डू, या तो हमें किसी एक मशीन में कुछ सुधार करना होगा, संशोधन करना होगा, या इस पूरी लाइन को ही हमें बदलना होगा. सो दैट इज़ अ लॉस ऑफ प्रोडक्शन. सो दिस इज़ अ ड्रॉबैक, बट एडवांटेज ये है, लाभ ये है, फ़ायदा ये है कि इससे हमें हाई क्वांटिटी मिलती है. नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, दैट इज FMS. It consists of computer CNC machines are using, that is programmable, and other programmable automation is there. So what is the benefit of this type of system? Now suppose we are having machine 1, machine 2, machine 3, machine 4 and machine 5. This is the output and this is the input. Now the benefit of this is, suppose an existing product, we are getting a existing product from this, एक जो existing demand है उसके द्वारा हम इस system के द्वारा हम production कर रहे हैं. Now after completing one set of batch, now we have to produce second batch. So what we have to do, we can easily, because these are computer numerical control, we can easily edit the program. Or suppose the sequence of this is O1, O2, O3, O4, O5. This is a sequence. We can easily change the sequence of operation. We can improve the functionality of individual machines, means we can perform number of operations over this machine or this machine. So that is the flexibility of this type of system. But we are not getting the high quantity. इससे हमें variety मिल जाती है, लेकिन high quantity of the product we will not get through this type of systems. Now responsiveness, the need for market. Responsiveness is an attribute enabling manufacturing system to quickly, rapidly launch new products. हमें new products को rapidly तुरंत बनाना है, launch करना है, because competition है market में, customer को जल्दी से जल्दी हमें डिलीवर करना है ऑन एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड टू रिएक्ट रैपिडली. तो हमें अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम में कैसे चेंज करना हो, कैसे चेंजेबल करना हो, उसे सिस्टम को बनाना हो जिससे कि वो तेज़ी से रिएक्ट करे और कस्टमर की नीड को फुलफिल करे. सो मार्केट चेंजेस, यानी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को कैसे चेंज करना होगा. चेंजेस इन करंट प्रोडक्ट, करंट प्रोडक्ट में कुछ चेंज हो रहा है या कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, तो किस तरह से हमें सिस्टम को चेंज करना है. वी आर सीइंग दैट डेली वी आर गेट न्यू 4-व्हीलर्स आर कमिंग, डेली न्यू मोबाइल्स आर कमिंग इन द मार्केट. सो दैट इज़ द नीड ऑफ द कस्टमर. सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू चेंज आवर सिस्टम सो दैट इट रिएक्ट्स रैपिडली. कस्टमर्स ऑर्डर, कस्टमर के ऑर्डर को समय पर पूरा करना है. गवर्नमेंट रेगुलेशन, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, सेफ्टी और एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस हैं उनको पूरा करना है. आवर सिस्टम शुड बी इको फ्रेंडली, इट शुड बी फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन आल्सो. सो दीज आर द पैरामीटर एंड फॉर दीज पैरामीटर देयर इज अ. सो नेक्स्ट इज द रिकॉन्फिगरेबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम और वी कैन से एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम. रिकॉन्फिगरेबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम. So a reconfigurable manufacturing system, that is known as RMS.
is a system designed at the outset for rapid change in structure. So, rapid change in structure means structure, there are two types we can say structure, that is hardware and software. So, these are the two types of structure, hardware and software. So, these two type of structures, these should be modular in nature, modular in nature. So, modular means we can easily add the modules, remove the modules or readjust the modules. So, when we are talking about hardware modules, so these are divided modules. Modules are divided into two parts, basic modules and auxiliary modules. Basic modules and auxiliary modules. So, basic modules are those modules which we cannot add, remove or readjust, while auxiliary modules are those modules which we can add, remove or readjust. So, for example, if we take a lathe machine, so in lathe machine there are different modules like bed is there, column is there, tool post is there, tail stock, head stock, bed, column is there. So, like column, bed, these are fixed, we cannot add, remove or readjust as per the requirement. Means some after performing one operation we have to make some changes. So, we cannot change in that, means we cannot add a new column or some changes we cannot done easily. So, reconfiguration is not possible in that case. So, our focus is on auxiliary modules. So, auxiliary modules are like spindle modules, tooling system, tooling modules like tail stock, we can say tail stock, etc. So, spindle modules we can say that, or tail modules, tail stock is there. If the length of the shaft increases or we need some like, so or we need some support is there, said like we have to perform drilling operation. So, we can make or we can move tail stock from one place to another place, and also we can make some changes at the tail stock end. Similarly, tool post, spindle modules, these are smaller in nature and that we can easily add, remove or readjust as per the requirement. So, these are modular in nature and as per the requirement. Not only these we can change the structure, or we can see the different type of reconfigurable manufacturing system properties are there. So, accordingly we can scale up, scale down, means if the demand is increasing. So, at the machine level we can increase the number of spindle. So, like that, one, 2, 3, 4, 4 spindle is there. So, if the demand is increased, we can perform 4 operations, like this is one job, job 2, job 3, job 4. So, we can perform operation over these 4 jobs. If the demand is decreasing, we can remove these 2 spindles and we can perform the operation over these 2 jobs only. So, that is the modular or reconfiguration at the machine level. Similarly, reconfiguration we can do at the stage level. Stage level means like if we are having machine 1, machine 2, machine 3, machine 4, machine 5. These are the machine, different machine is there. So, different operations are 1, 2, 3, 4, 5.
So, reconfiguration at the machine level, that we can do by increasing the number of spindles, or we can say that that is modular in nature, the spindles are modular in nature. We can also do what we can do, we can increase the number of machine at any stage, like at third stage, if the demand is increasing and we need more machines. So, we can increase the number of machine at this stage. So, that is called scalability. So, change in structure, hardware and software, modular in nature, and quickly adjust production capacity and functionality within a part family. Means this type of system basically focused on the part family. Part family means a family having the similar type of characteristics, similar nature, like we can say gears are there. So, these gears are a one family, shafts are there of different length, that is a second family having diameter, certain diameter, pulleys are there, that is a third family, because they are having similar characteristics. So, these are the different part families. If the system and its machines are not designed at the outset for reconfigurability, यदि हम जो सिस्टम बना रहे हैं या मशीन बना रहे हैं उसमें रिकन्फिगरेशन मशीन लेवल पे नहीं है या सिस्टम लेवल पे हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, देन इट विल बी वेरी वेरी कॉस्टली एंड इम्प्रैक्टिकल. तो वो बहुत ही कॉस्टली होगा और हमें चेंज करना कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से. यदि नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है तो हमें एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ नए प्रोडक्ट के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसको इंटीग्रेट करना होगा. यदि ऐसा नहीं है तो ये बहुत ही कॉस्टली होगा. Then these are the different characteristics of RMS, like modularity, integrability, convertibility, diagnosability and scalability. So, modularity means design all system components both hardware and software to be modular in nature, that is auxiliary modules. Basically these are auxiliary module which we can easily add, remove and readjust. Then comes the integrability, design system and components for both ready integration with future introduction of new technology. जब नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है तो जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम की टेक्नोलॉजी है उसके साथ इजीली इंटीग्रेबल हो, अदरवाइज जो कॉस्ट है आरएमएस का जो पर्पज़ है वो पूरा नहीं हो पाएगा. मैकेनिकल कंपोनेंट का इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के साथ इजीली इंटीग्रेशन होना चाहिए. कन्वर्टिबिलिटी इजीली होनी चाहिए, मोर कन्वर्जन रेट होना चाहिए. पैरेललिज्म वी कैन से that a machine can perform a number of operation. Diagnosable होना चाहिए, identify quickly the sources of quality and reliability problems that occur in large system. जब एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका ट्रायल रन होता है, कुछ सिस्टम में चेंजेस होते हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ एरर आने की संभावना होती है, तो उसको सिस्टम इजीली डायग्नोज कर ले जब हम तक कि वी विल गेट अनलेस अंटिल वी विल गेट मैच्योरिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट. मीन्स उसका जो प्रोडक्शन रेट है वो मैच्योरिटी लेवल पे पहुंचे, तो उससे पहले भी जो एरर आ रही हैं वो हम रिमूव कर सकें. तो डायग्नोजेबल होना चाहिए. स्केलेबल allows for quick change in the capacity of machines either by adding more modules or increasing machines in parallel. So, these are the different characteristics of the reconfigurable manufacturing system. So, from this we can conclude that these are, so today we have discussed different type of manufacturing system. First we have discussed about manufacturing system, what is manufacturing system, how the machines are integrated to each other. Then different types of manufacturing system. First dedicated manufacturing system, we are not using any software or computer sort of things. Then flexible manufacturing system, where variety of products हमें मिल सकते हैं. Then reconfigurable manufacturing system means both software and hardware components are modular in nature. So, this is about today's lecture. In the next lecture we will discuss more manufacturing system like lean manufacturing system, cellular manufacturing system, etc. And we will also discuss the case studies, so that we can easily understand what is happening in the shop floor and what is the actual meaning. एक manufacturing system का actual meaning क्या है वो हम समझ सकते हैं. Thank you.